News now of the Supreme Court, which conducted a hearing in the Lakhimpur Kheri violence case today, a week after it had rapped the Uttar Pradesh police for dragging its feet in the investigation. A top lawyer, Harish Salve, who's representing Uttar Pradesh government, said that the statements of 23 eyewitnesses had been recorded, to which the Chief Justice asked why only 23 so far and directed them to identify more witnesses as it was a big farmers' rally. Remember, 8 people, including 4 farmers and a journalist, were killed on October 3rd during the farmers' protest in Lakhimpur Kheri after an SUV allegedly belonging to Union Minister of State for Home Affairs Ajay Mishra's convoy ran over them. His son Ashish Mishra is in jail. Let's go across to Sukirti now for more. And Sukirti, the next hearing is on the 8th of November. Tell us more about what went on in the court. Well, yes, today Mr. Harish Salve, who was representing the UP government, informed the court that at least 30 witnesses' statements have been recorded so far, out of which 23 are eyewitnesses. And the court expressed its objection to such a low number of eyewitnesses. The Chief Justice of India pointed out that it was a rally of thousands of farmers. How come there are only 23 eyewitnesses? Justice Suryakant said that, okay, if it was a crowd of even 4,000, 5,000, there may have been a lot of bystanders also among them. But given that fact, there might have been even still a significant number of people who may have seen the serious incidents that took place, and it should not be difficult for the police to identify these people because the protesters or all of those who participated in the rally, majority of them were locals only. So identifying them, tracing them should not be that difficult for the administration, and that is the task that the administration needs to get on to immediately and start recording their statements. I have with me the petitioner in the case, Mr. Shiv Kumar Tripathi. He's a lawyer. He's the one who had filed this petition. We will speak to him for more. Sir, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से कोर्ट ने दोबारा जिस तरह से जांच चल रही है उस पर सवाल उठाए हैं, तो ऐसे में आपका क्या कहना है कोर्ट की प्रतिक्रिया को देखकर? मुझे ये लगता है कि अगर ये शायद कोर्ट के संज्ञान में ना होता तो ये प्रकरण कब तक ख़त्म हो चुका होता। कोर्ट को जो भी ये रिपोर्ट देते हैं सीलबंद देते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? कोर्ट ने जबकि कहा भी कि हमें सीलबंद रिपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो है ये पिटिशनर को भी नहीं देते हैं। अब इससे अंदाज़ आप लगा सकते हैं कि इनकी मंशा क्या है। 4,000 से 5,000 तक की बीच की गैदरिंग बताई जाती है जो भी था उसमें, और उसमें इनको केवल 23 लोग मिले जिनको आई विटनेस, जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ज़्यादातर उसमें लोकल थे। उनका ये कोर्ट का ये भी मानना था कि आपको इतने लोगों में कोई एक इंजर्ड भी नहीं मिला, इंजर्ड विटनेस नहीं मिले जो कि आप उसको भी पेश करते। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो है अगर आपने फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है टाइम से नहीं मंगाई तो मुझे लगता है कि फोरेंसिक लैब को डायरेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप अगली बार तक नहीं करते हैं तो मुझे जो है इस पर कोई ना कोई डायरेक्शन पास करना पड़ेगा। कोर्ट का ये मानना था कि अगर आपने जो है सारी रिपोर्टें हैं जितनी भी हैं उसको आप समय से देने पे के बाद भी अगर उस रिपोर्ट को कोर्ट चाहती थी कि जो है सारी चीज़ें सामने खुल के आएँ, चूँकि उन्होंने 1-2 पैरे के बाद ही कही थी, चूँकि रिपोर्ट हमारे पास थी नहीं इसलिए हम उसको क्लियर तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना मानना था कि कोर्ट उनकी जो भी इन्होंने रिपोर्ट आज तक दी है उससे संतुष्ट नजर नहीं आई है। कोर्ट से बात करने के लिए. So that is the petitioner here who is pointing out that even the copies of the status reports are not being shared even with the petitioners, and also there is a problem with the pace at which this entire investigation is being carried out, and that is something that the Supreme Court has repeatedly questioned the UP government on.